we can start. Yeah. Can I start now? Yes. Ma'am is there. Principal ma'am is there, na? Yeah. Yes. Yeah. Okay. So, good afternoon, members of teaching fraternity and student participants. Myself, Professor Sangeeta Jagya, Department of Accountancy, hereby set in motion the special lecture series on practical insight of accounting, organized by Seva Sadan's R.K.Talreja College, Department of Accountancy. On this platform, we have with us Dr. Geeta Menon, Chairperson and Principal of R.K.Talreja College, Professor Sunil Khatri, Vice Principal, Department of Accountancy, Professor Neelam Kapoor, Convener of Technical Committee and Head of Physics Department, Professor Alka Gulani, Head of Accountancy Department. Today's speaker, Professor Nishika Ahuja, Department of Accountancy, and team members of Accounts Department, CA Bharat Khatri, Professor Aisha Kanjan, and Professor Shruti Kumar. I will unfold the schedule as you cruise through the series. I now request Professor Alka Gulani, Head of Accountancy Department, to brief the participant about this special lecture series on practical insight of accounting. Over to you, Alka. Just a minute. Unmute yourself. Okay. Sorry. Respected Principal Dr. Geeta Menon, Vice Principal Sunil Khatri, Convener of Technical Committee Dr. Neelam Kapoor ma'am, my energetic team, my friends and students. One businessman is doing business and he is calculating his income, expenses and profit, of course, because for profit he is doing business. Another businessman, he is also doing business, he is also earning profit, but he is writing income, expenses and profit in different way. So both businessmen, they will write their income, expenses and profit in their own way. No, not at all. So there is system of writing all the transactions of business. Transactions means लेना देना, कितना purchase किया है, कितना sale किया है, क्या कितना पैसा भरा है, कितना हमको मिला है. So there is system of writing all transactions of business is called accounting. So accounting makes possible to record, to analyze and to report financial information systematically. It is like learning the important basics for the real work. So students, whenever you go, wherever you go, whichever job you may choose in future, accounting is used in every path of life. Hence, we are conducting 3 days lecture series on practical insight of accounting, discussing different topics like basics of accounting, tally, taxation, which will not only make you more confident, but will also open the doors for new learning. So students, attend all 3 days to get more and more knowledge. And if whatever you have query, don't talk, don't disturb between that. Only in chat box, you write your question, your query, whatever you had out. We'll guide you, we'll solve your questions. Okay. Thank you, Alka ma'am. That was a beautiful introduction by our HOD. Now I request Dr. Geeta Menon, Chairperson and Principal of R.K.Talreja College, to say a few words on this occasion. Principal ma'am. Hello. Yeah, ma'am, you are audible. Yes, thank you. Thank you, Sangeeta. And good afternoon to one and all. Today we are all here to attend a lecture series specially thought and designed
for all the students, in fact, even adults who wants to know about accounting. My dear friends, as rightly pointed out by our head Alka Madam, accountancy is the language for business or of the businessman. Because whenever you have to deal with your finances, it should be in a terminology which will explain everything in a short and a sweet way. We are dealing with numbers. We are dealing with numbers in, I won't say thousand and crores, it goes beyond it. So it is a language of business. I always believe, as a common man, our mother and father, most places it's the mother, but in some houses it's the father who runs the home and manages the accounts. But of course, that always is in a limit of your salary. But when I'm doing business, maybe I'll start with a small amount. But later on, since I'm an ambitious businessman, I require to understand how to present my accounts also. Here we are expecting every student, maybe from arts faculty, science faculty, maybe CS, IT, engineering, medical, hoping that tomorrow you are an entrepreneur, hoping that tomorrow you will enter into business, hoping that tomorrow you will come across the terms which I as a principal has come across and learning it today. My dear friends, we must be acquainted with the terminologies used in accountancy because tomorrow is our life. Tomorrow we will be exposed to this. Even if you are a shareholder, you will be exposed to it. Even if you are doing small business, you will come across it because you have to present it. At that minute, we should not feel that, oh, I should have learned it. Oh, I should have known it. Or we should not come up with an idea that it is a commerce thing. Why should I as a science student know about it? So here we are with a new idea whereby we are giving you a lecture series under the title Practical Insight of Accounting, whereby we are giving you 3 lectures open for everyone, a staff, a common man, it can be any adult. You can give the link to the people who wants to know it. So here we are going to tell you about basic accounting and financial reporting, tally as a tool for accounting, and basics about IT, income tax, and the GST. Whether you want to know about accounting or no, but 100% if you are going to have a job tomorrow, you must know about your IT, income tax. Tally is also a very important tool. So my dear student friends, we are looking forward for your cooperation, attend the program and make our team. We want our team to feel that yes, their efforts are not gone wasted. Please attend the program and make the best use of it. Get well versed with the terminologies, at least hear them and know what it is for your sake, so that tomorrow is your sky and the limit is limitless. The sky is the limit. So I wish all the best to my team under the leadership of Alka Golani Madam, Sunil Khatri, Bharat Khatri, and the new added teams there. I congratulate each and everyone who has joined us to learn about it, to know about this, and I hope everyone takes the best of this and let the program, the idea itself to have a lecture series, be a grand success. Thank you. Over to you, Sangeeta ma'am. Thank you, Principal Ma'am. That was a short and sweet address from our beloved principal, showing warmth and concern. I now request Professor Neelam Kapoor, convener of Technical Committee and Head of Physics Department, to share her views with us.
Professor Neelam Kapoor, ma'am. Thank you, Sangeeta. Respected Principal Dr. Geeta Menon, HOD of the Accounts Department, Professor Alka Golani, HOD of the Economics Department, Dr. Manjushri Dole Madam, all the team members of the Accounts Department, and all other teachers. At the end, all the students. Good afternoon to all. We are here to learn something which at least I have never learned. I keep asking my husband about it. He's from accounts. So the idea is good. All of you, and I congratulate to account department, all these students, if you are not from the commerce, then there are terms which you are not knowing at all. But आज के जमाने में जब आप जॉब करने जाओगे या बिजनेस करोगे या अपना अकाउंट किसी को बनाने के लिए देंगे, तो आप अकाउंट तो नहीं सीख सकते 3 दिन में, पर एटलीस्ट आपको टर्म समझ में आएगी, एटलीस्ट आप उस अकाउंट्स जो उन्होंने आपको बना के दिया है आप उसको क्रॉस चेक कर पाएंगे. मेरा व्यू एज अ प्लेसमेंट सेल कन्वीनर is always that how it will help you to place. So this will be a very helpful certification for you. Even if you are not from commerce, at least you know the terms. So it is good for all the students. Pay attention, learn the new terms. In one lecture, you cannot learn about accounts, you cannot learn about tally. This every one of us know, your teachers know, लेकिन हम सब ये जानते हैं, लेकिन ये है आपको इंट्रोडक्शन के लिए लेक्चर्स. अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो इसके ऊपर कोर्स किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मुझे पता ही नहीं है भाई क्रेडिट और डेबिट क्या होता है, और अचानक आपके सामने किसी ने अकाउंट रख दिया और आप बोलेंगे मुझे तो ये टर्म्स ही नहीं पता है. तो एक इग्नोरेंट आदमी की तरह बिहेव करने से कहीं ये बेहतर है कि आप कुछ तो जानते हैं उसके बारे में. सो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट भी है और ऑर्डर भी कि यू अटेंड देम प्रॉपरली. अगर आप कॉमर्स से नहीं हो तो उसको छोटी छोटी टर्म्स को नोट करो और बाद में उसको स्टडी कर सकते हैं. ज्यादा जो कॉमर्स से है वो देखो कि कौन सी टर्म्स तुमसे मिस हो गई और किसका तुम्हें एक्सप्लेनेशन और ज्यादा चाहिए. वो अभी तुम्हारे सभी काबिल टीचर यहाँ हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आपसे आपको करवाया जाएगा, या आप क्वेश्चन पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा और इनसाइट ऑफ द अकाउंट्स देख सकते हैं. सेकेंड व्यू है कि जो आप थियरी पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो पूरी तरह से लागू नहीं होती. सो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसके सिखाए जाएंगे ताकि आपको कुछ पता चले कि जब हम बाहर इंडस्ट्री में या जॉब के लिए जाएंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए. सो आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट. थैंक यू संगीता. Thank you, Kapoor ma'am. That was truly an inspirational, motivational speech for all the participants. I now would like to introduce our eminent speaker, Professor Nishika Ahuja. Professor Nishika Ahuja, postgraduate in commerce, SET and NET qualified, having 5 years experience, teaching experience, and secured 7th rank in National Commerce Olympiad, and was selected as Rotaract President of respective college club. And now the moment for which we are all waiting for. The floor is open for our speaker, Professor Nishika Ahuja, Department of Accountancy. And one announcement, all participants are requested to post their queries in chat box. The speaker will address all the questions at the end of the session. Over to Professor Nishika Ahuja. Thank you, Sangeeta ma'am. Good afternoon, one and all. Myself, Nishika Ahuja. I am glad I have received such a great
opportunities from our HOD Alka Gulani ma'am and also from our principal. Being such a young professor of this college, I have received such a great opportunity to be on this platform and present my knowledge and my insights of accountancy with you all. So thank you once again and welcome everyone for this session. Now I would like to start our session for the day. Shall we all begin? Let me share my presentation with you all. The presentation is not visible. Just a minute, sir. Okay, student, the feedback form will be shared at the end after the completion of this lecture. So stay tuned till last. So till ma'am share the screen, it is very good opportunity for all of you to learn about the basics of accounting today, basics of accounts, financial reporting, formats, and all these areas ma'am will be covering. And tomorrow about the tally, how company is created, how accounting is done, various payment options, vouchers, and configurations that will be covered tomorrow by Lakshmi madam. And on third day, I will be covering about income tax and GST, the basics that if you go for an interview, if somebody asks you what is GST, what is income tax. So as a commerce student, we are aware, but for science and art student, they are not aware or might be aware, but in a simplified way, from practical point of view, what is GST and what is tally, what is accounting, these points will be covered in these 3 days. So ma'am, are you ready or is there any problem? And all students till madam will share screen. I think it is working. Yeah, We all can students will get benefit definitely. So please concentrate. Yeah, over to you, ma'am. Yes. Thank you, sir. Am I audible? That is fine. It is fine. Okay. Okay. Our topic for the day is basics of accounting and financial reporting. As our principal and as well as our HOD ma'am presented already, that this session was actually designed for the people who were thinking. This session was actually designed and presented for the people who don't even know the concepts, which are the basic day-to-day concepts we deal in our life. मैम ने मुझे एक बार बहुत पहले मीटिंग में बताया था कि वी ऑल टॉक अबाउट द बेसिक टर्म्स कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एंड मेनी पीपल डोंट कम अक्रॉस दीज टर्म्स डे टू डे. We do hear these concepts, but we do not have the proper knowledge of what do we mean by the debit and credit terms or debtor or creditor. So let us all we have the basic glitch of the बेसिक थिंग ऑफ द नॉलेज कि हम लोग अकाउंट्स में एक्चुअली क्या क्या टर्मिनोलॉजी डे टू डे बेसिस पे यूज होते हैं एंड व्हेन एनी अकाउंट कम अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ अस, सो व्हाट ऑल वी कैन नो फ्रॉम दैट. लेट मी स्टार्ट विद इट. Okay, let us see accounting in brief explanation first. See, जब भी कोई भी बिजनेसमैन या इन आर डे टू डे लाइफ ऑल्सो हम घर पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं. अभी जैसे कल एक मीटिंग में हम अलका और मैम और हम लोग सब बैठे थे, तो मैम ने कहा कि हम हर घर में अकाउंटिंग करते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं. अभी हमारी प्रिंसिपल मैडम ने भी बताया कि बेसिकली मदर्स या हमारे जो डैड रहते हैं, हेड ऑफ द फैमिली रहते हैं,
वो बहुत सारे अकाउंट्स हैंडल करते हैं, बट इट इज नॉट इन अ पेपर फॉर्मेट, वो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, वो कोई फॉर्मेट में हम प्रेजेंट नहीं करते, but it is going on, it is happening, it is just not recorded in the books of account. So let us see कि accounting होता क्या है. सबसे पहले अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, the first task we do is recording. हम लोग कहीं ना कहीं एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. टेक एन एग्जाम्पल, हमने घर पे लाइट का बिल पे किया, हमने किसी को कभी सैलरी पे किया, एनी ट्रांजेक्शन, हमने कुछ परचेसिंग किया, we have a recording of that transaction in a particular set of book, in a particular place. एक किसी जगह पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करके रख देते हैं. Then we have a classification. हर एक चीज को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है. देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस जहाँ पे हम अपने ट्रांजेक्शन को, हमारी एक्टिविटीज को अलग अलग जगह पे बाइफरकेट करके रखते हैं. वी हैव अ सेग्रीगेशन ऑफ अकाउंट्स जहाँ पे हम उनको पुट अप करते हैं और वहाँ पे उसको प्लेस किया जाता है. तो आफ्टर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन वी डू क्लासिफाइंग ऑफ द ट्रांजेक्शन. देन वी समराइज इट. अपने आप की स्टडी करने के लिए, वंस वी आर थ्रू विद द होल फाइनेंशियल ईयर, होल अकेडमिक ईयर जब हो जाता है, या हमारा घर का एक पूरा साल खत्म हो जाता है, या सपोज एक मंथ खत्म हो जाता है, तो एक समरी प्रेजेंट होना चाहिए. जैसे कि अगर आप देखो, कभी कभी हमारी मॉम्स की हैबिट होती है कि अगर वो कोई भी टाइप का एक्सपेंडिचर करती है तो वो कहीं लिख के रख देती है. तो इट इज जस्ट फॉर हर समरी कि उनको समझ में आए कि उन्होंने कितना अमाउंट उनके हाथ में आया और कितना उन्होंने एक्सपेंस किया. सिमिलरली व्हेन अ बिगर कंसर्न इज देयर, तो उनको पूरा समराइजेशन में समझ में आना चाहिए कि उनके थ्रू आउट द ईयर कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कहाँ से रेवेन्यूज आए हैं, एंड व्हाट विल बी द नेट इन हैंड रेवेन्यू, उनके हाथ में क्या प्रॉफिट बचे हैं, या इफ एट ऑल वो कंपनी ने कोई लॉसेज इनकर किया. एक बार आपने समराइज कर लिया, देन यू कैन स्टडी इट, यू कैन एनालाइज इट, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने क्या मिस्टेक की थी, आपने क्या अर्न किया था, आपने क्या इसमें से इस पूरे साल में आपने क्या क्या अपने थ्रू आउट द ईयर ट्रांजेक्शन को आप एनालाइज कर सकते हो कि व्हाट ऑल वर योर डिफरेंट एक्सपेंडिचर. सिमिलरली हम हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी एक एनालिसिस कर सकते हैं. एक टाइप का, एक समझो कि आप बजट स्टडी कर रहे हो कि आपको आगे क्या करना रहता है. तो आफ्टर एनालिसिस वी इंटरप्रेट, हम उसमें से कुछ अंडरस्टैंड करते हैं. वी प्रिपेयर अ काइंड ऑफ रिपोर्ट आप बना सकते हो. अगर कंपनी है, देयर विल बी डिफरेंट रिपोर्ट्स मेड आउट ऑफ इट. अगर हम अपने डे टू डे बिजनेस के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है. हम आगे का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं. हम ये सोच सकते हैं कि हमें कुछ एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, या हमें कुछ रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए और क्या करना चाहिए. देन वी कम्युनिकेट इट. अगर कोई भी कंपनी रहेगी तो वो अपना डेटा कम्युनिकेट करती है विद, दे डिस्क्लोज देयर डेटा विद एवरीबडी आउटसाइड, स्पेशली टू द शेयर होल्डर्स जिन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया रहता है. Or else you can prepare a report जो communicate की जाती है to the top management of the company, so that वो लोग आगे का planning अरेंज कर सकें. So the purpose of accounting basically is to understand कि future course of action के लिए हम लोगों को अगर कुछ decisions लेने हैं तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि इन और पूरे साल में हमने क्या पैसा खर्चा किया, क्या बचा, क्या इन हैंड है. एक एग्जाम्पल अगर आप पकड़ो, कोई भी एक छोटा मोटा अगर सेलर रहेगा, कोई अगर आप ग्रोसरी स्टोर लेते हो, उसका भी डे टू डे बिजनेस इतना रहता है. अगर वो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, कहीं पे भी लिख के नहीं रखेगा कि कितने गुड्स उसके पास आए, कितना उसने बेचा, कितना माल पड़ा है, कितना उसका अमाउंट वहां पे लगा हुआ है, उसको एट द एंड ऑफ द थिंग उसको ये तो पता होगा कि उसने सेल किया, लेकिन उसमें से कुछ प्रॉफिट कमाया, कुछ नहीं कमाया, कुछ अमाउंट उसने ब्लॉक कर लिया, ये सब आइडियाज उसको नहीं मिलेंगे. So the basic of accounting is to understand, analyze कि हम लोग क्या क्या ट्रांजेक्शन डे टू डे कर रहे हैं और उसमें से कुछ हमारे हाथ में इन हैंड एट द एंड बच रहा है या नहीं, एंड फर्दर एनालिसिस. मूविंग फर्दर, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, एंड आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू लर्न. हम लोगों ने यही समझने के लिए अपने बेसिक जो लेक्चर्स रखे हैं, ये सेशन रखा है, बिकॉज अभी अगर सेशन स्टार्ट होने के पहले ही मैं बात करूँ, आई जस्ट saw something in the chat box कि debit what comes in, credit what goes out. Even for a commerce student, I would not say कि this is something, ये एक one of the accounting rule रहता है. I would not say कि ये कुछ गलत है, but even after one person is a graduate, उसको सिर्फ यही रूल अपने माइंड में याद रहता है that debit what comes in and credit what goes out. But apart from that, there are various important terms जो हम लोग डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, which a layman doesn't understand.
So let us have a glimpse of that कि कौन से terms जो हैं हम लोग regular basis पे सुनते रहते हैं जिसका हमें कुछ idea होना चाहिए. Assets, liabilities, ये बहुत commonly लोग use करते हैं words, बहुत commonly लोगों को पता होता है कि assets होते हैं, कुछ liabilities होते हैं. अब what do we call it as a asset? लोग बोलते हैं कि asset मतलब हमारी property, हमारी wealth या जो हमारे पास हाथ में पड़ा है ये मेरा asset है. टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फोन है तो वी से कि दिस इज माय asset. मेरी खुद की गाड़ी है तो दिस इज माय asset. So do we have the limitation of just the property which we call it as an asset? Let us see assets के अंदर what all things can be comprised. सबसे पहले आपको बताया गया कि assets are the resources owned and controlled by a business enterprise. This is one thing which we can call it as कि हाँ एक businessman की, एक business company की जो भी property है, जो भी वो अपने अंदर में own कर रहे हैं या जो भी चीजों को वो control कर रहे हैं, उन सारी चीजों को, वो सारे resources को वो अपने assets बोल सकते हैं. This is from the point of view of a company. मैंने आपको एक common person के हिसाब से बताया कि अगर उसका phone है, that they can call it as an asset. अगर उनके पास खुद की एक private vehicle है, that they can consider as an asset. They have a property of their own. एक land है, एक plot है, एक घर है उनका, that can also be termed as an asset. So few examples of assets are land, machinery, cash. आपके पास जो हाथ में cash पड़ा रहता है, that is also obviously your asset. अब इस ड्यूरेशन में लास्ट 2 years से जब भी पूरा लॉकडाउन चल रहा था, ये पैंडेमिक चल रहा था, दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट वन वाज हैविंग. नोबडी वांटेड कि उनका पैसा कहीं पे ब्लॉक हो. इन हैंड कैश रखना कितना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट अभी हमें समझ में आया था. कि भी बैलेंसेस हमारे पास हैं, स्टॉक हमारे पास पड़ा है, एक बिजनेसमैन है, उसके पास अगर उसका कुछ स्टॉक पड़ा है तो वो उसके लिए असेट हो जाता है. देन देयर आर कैटेगरीज ऑफ असेट्स. 2 कैटेगरीज में हमने असेट्स को डिवाइड किया हुआ है. वन इज अ फिक्स्ड असेट एंड वन इज अ करंट असेट. नाउ विद द नेम फिक्स्ड. फिक्स्ड का मतलब होता है कि कोई चीज हमने फिक्स करके रखी है, एक जगह पे फिक्स है. वी डोंट से इट एज कि वो इमूवेबल है, नॉट नेसेसरी इमूवेबल, लेकिन इट इज फिक्स. बहुत टाइम तक मेरे पास ये फिक्स है रहने वाली. से फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर से एक टीवी खरीदा, आप हर रोज जाके टीवी नहीं खरीदने वाले हो. ये वन टाइम खर्चा आपने किया है. आप ऐसे सोचोगे कि ये जो एक्सपेंस है ये मेरे पास लॉन्ग टाइम तक के लिए रहने वाला है. आप बोलोगे मैम टीवी खरीदा, ये तो हमारा खर्चा हो गया. यू आर कॉलिंग इट एज एन एसेट. यस, बिकॉज वो हम लोगों को लॉन्ग रन में बेनिफिट देने वाला है. एंड आई एम नॉट हैविंग दैट असेट फॉर द रीसेल पर्पज. मैंने उसको बाय तो किया है बट मेरा इंटेंशन रीसेलिंग का नहीं है. दैट इज व्हाई दैट बिकम्स एन असेट फॉर मी, बिकॉज आई हैव परचेज टू यूटिलाइज इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एनी असेट जो आप अपने पास लॉन्ग टाइम के लिए रखने वाले हो, यू कैन कैटेगराइज इट अंडर द फिक्स्ड असेट. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत बार कंपनीज के लिए बोला जाता है कि कंपनीज के फिक्स्ड असेट्स इतने हैं, या मेरे पास फिक्स्ड असेट्स इतने हैं, हमारे शॉप के, हमारे बिजनेस फर्म के फिक्स्ड असेट्स इतने हैं. मूविंग ऑन टू करंट असेट्स. करंट, द वर्ड करंट इज वेरी कॉमनली यूज. करंट का मतलब होता है जहाँ पे आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है, जहाँ पे कुछ अप एंड डाउन होता रहता है, कुछ आता रहता है, कुछ जाता रहता है. तो असेट्स की बहुत सारी कैटेगरीज बिजनेस के अंदर ऐसी भी होती है जो आती जाती रहती है, हमेशा फिक्स नहीं रहने वाली है. कभी पैसा ज्यादा रहेगा उसमें, कभी पैसे कम रहेंगे. तो वो वाले टाइप के एसेट्स को हम करंट एसेट्स बुला सकते हैं. Say for example, anything which is required in the business to carry out the day-to-day activity. हर रोज की एक्टिविटी के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल तो हाथ में कैश ही है. हर दिन हमको कुछ ना कुछ कैश चाहिए जिससे हम लोग कुछ बाय करेंगे, सेल करेंगे. है वो हमारी प्रॉपर्टी, लेकिन हर रोज वो कैश सेम नहीं होने वाला. किसी दिन एक बिजनेसमैन के ड्रॉअर में वो ओपन करेगा 20,000 पड़े रहेंगे, किसी दिन 5,000 पड़े रहेंगे. इट इज वन थिंग विच इज कीपिंग ऑन फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन. वो ऊपर नीचे होता रहता है. So that we call it as a current asset. Similar is the case with the bank balance. Again, inventories. Inventories in general terms called as a stock. जो भी रॉ मटेरियल पड़ा है, आपके पास आधा तैयार माल पड़ा है, या आपके पास कुछ गुड्स पड़े हैं रेडी होके, वो सारी चीजें इन्वेंट्रीज के अंदर चली जाती है. Then we have debtors. This is again one of the important terms. I have another slide to explain you debtor in detail. So we will just keep it for a bit. हम लोग debtors को 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखते हैं. Moving on to the liabilities part. Considered as liabilities का मतलब होता है, नॉर्मली जब हम liability टर्म को सुनते हैं
तो हमको लगता है कि हमारे ऊपर, बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे मेरे ऊपर ये लायबिलिटी है, ये कंपनी का लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का मतलब इन जनरल सेंस क्या कंसिडर करना चाहिए? लायबिलिटी का मतलब होता है एनी ऑब्लिगेशन विच यू आर पेबल टू आउटसाइडर। अगर आप बाहर किसी को कुछ भी पे करने वाले हो, से फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड को बोल के रखा है कि आपको 5,000 रुपीज की नीड है, आप थोड़े टाइम के बाद पे कर दोगे, आपने 1 मंथ के लिए उससे कुछ उधारी लेके रखा। दिस इज समथिंग, टिल देन यू आर रीपेइंग दैट पर्सन। जब तक आपने अपने उस फ्रेंड को वो पैसा वापस नहीं किया, उस टाइम तक के लिए ये अमाउंट आपके ऊपर एक बर्डन बन जाता है। दिस बिकम्स अ ऑब्लिगेशन ऑन यू, दिस बिकम्स अ लायबिलिटी ऑन यू। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज के आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। एनीथिंग विच यू हैव बोरोड, जस्ट लाइक दैट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपने किसी से बोरो किया, मे बी फ्रॉम अ फ्रेंड, मे बी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक, कैन बी ऑफ अ वैरायटी ऑफ लोन, कोई भी टाइप का लोन अगर बोरो कर रहे हो। देन देयर आर क्रेडिटर्स। These debtors and creditors are again some important terms which come across in the day-to-day accounting business. So let us see इन डिटेल की डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। अगर हम कॉमन भाषा में बात करें तो ये एक्चुअली ऐसा टर्म है जो हर रोज हम सभी लोग यूज करते हैं, कस्टमर और सेलर। डेटर इज समवन टू whom we are selling the goods. That is the someone who is purchasing the goods from us, but on credit. To highlight something, कि कोई भी पर्सन आ रहा है, दुकानदार से माल खरीद के जा रहा है, लेकिन क्रेडिट पे खरीद के जा रहा है। अभी के अभी वो ऑन स्पॉट पेमेंट नहीं करके जा रहा है वो मेरा कस्टमर ही, बट दैट इज कस्टमर अभी का अभी जब कैश पेमेंट नहीं कर सकता है, तो दैट बिकम्स द डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। से फॉर एग्जाम्पल कि गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, एक दुकानदार ने एक कस्टमर को, राम को, क्रेडिट पे कुछ गुड्स दे के वो पर्सन कैश पेमेंट नहीं करके गया, तो दैट राम पर्सन बिकम्स अ डेटा फॉर मी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। आपको अगेन अगर मैं एक डेली बेसिस का एग्जांपल दूं, बहुत बार बहुत सारे लोगों के नियर बाय के स्टोर्स रहते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स रहते हैं, या उनके कुछ केमिस्ट रहते हैं जिनसे वो है ना गुड्स बाय करके आते हैं, बट पेमेंट है ना वो लोग मंथ एंड पे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनसे परचेसिंग करते जाते हैं, दे कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट कि हम लोग ने बहुत सारी चीजें उनसे बाय की हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ वो हर एक कस्टमर से वो अमाउंट रिकवर करेगा। So till we are paying them, we become the debtor for that particular seller. जो पर्सन से हम लोगों को अमाउंट आके जाके मिलने वाला है, जिसको हमने गुड्स बेच के रखे हैं, जो हमसे उधारी पे माल खरीद के गया है, वो हमारा डेटर होता है। इन शॉर्ट, ऐसा कस्टमर जो पैसे नहीं देकर गया है, इन फ्यूचर आगे जाके हमको पे करने वाला है, टू whom we sell the goods on credit becomes our debtor. Similarly for creditor, from whom we purchase goods on credit. See, business world में this is a very common term कि हम लोग माल वगैरह जब भी परचेस करते हैं, कोई भी फर्म है वो जब गुड्स परचेस करते हैं तो वो क्रेडिट पे परचेस करता है। द टर्म में भी डिफरेंट, कुछ लोगों को 15 डेज के बाद पेमेंट करना रहता है, कुछ लोगों को 1 मंथ के बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो वी आर क्रेडिटर्स, हमारे लिए वो लोग क्रेडिटर्स बन जाते हैं जिनको हम पेमेंट करने वाले हैं। हमने किसी सप्लायर से गुड्स खरीद के रखे हैं, so that X supplier becomes the creditor for it. For example, goods purchased from Bharat on credit, so here Bharat is our creditor. I hope this term debtor and creditor is very well cleared now. ये बहुत commonly आता है और बहुत लोग इसका pronunciation वगैरह भी proper नहीं कर पाते हैं, specifically if you are from the non-commerce background, तो हम इनको debtor बोलते हैं। We call it as a debtor. Debtor is our customer, जिससे हमें आगे जाके कुछ अमाउंट मिलने वाला है, and creditor is our supplier or maybe from someone we have purchased the goods on credit. Moving further, our whole accounting system is basically based on double entry concept, debit and credit. Again, ये debit credit बहुत commonly day to day life में आता रहता है। बहुत जन, इवन जो हम लोगों के कॉमर्स के ही स्टूडेंट्स रहते हैं, वो बोलते हैं मैम हमें डेबिट क्रेडिट नहीं समझ रहा है, किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, क्या डेबिट होता है, किसको क्रेडिट बोला जाता है। बेसिक रूल्स के थ्रू तो वो क्लैरिफाई होता ही है, but it is very important to understand the whole double entry system. It is based on debit and credit.
सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि दिस इज द सिस्टम ऑफ कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मेजर कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो देयर आर डिफरेंट कंट्रीज हु फॉलो द सेम पैटर्न, जहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम पे हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, इट इज गिवन इन द सेकंड पॉइंट। ये ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है, इट इज बेस्ड ऑन सच अ प्रिंसिपल दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन और इन शॉर्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अकाउंट। हर एक कोई चीज का, कोई भी आप एग्जांपल पकड़ लो, आपने सैलरी पे की है, आपने कोई गुड्स खरीदे, कोई भी डे टू डे ट्रांजेक्शन आपका होता है, उसके एक्चुअली में दो एलिमेंट्स रहते हैं विच वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन। The two accounts have some effects in opposite direction, so it is very much necessary कि आप एक अकाउंट को डेबिट करते हो and you credit the another account. Two aspects have to be given, both multi-directional जो approach जाएगा, एक का side हो जाता है debit side and the other will appear surely on the credit side. So for every debit there will be a corresponding credit, and also for every credit transaction there will be a corresponding debit with equal amount. जितना भी आपका इफेक्ट होगा दैट विल बी इक्वलाइजिंग ऑन बोथ द साइड। दोनों हमेशा इक्वल अमाउंट के साथ ही आते हैं। हर डेबिट का क्रेडिट होगा, हर क्रेडिट का डेबिट होगा। जस्ट लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड, तो दोनों साइड जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। वैसे ही हर ट्रांजेक्शन के भी डेबिट और क्रेडिट दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा इक्वल अमाउंट के साथ होते हैं। एग्जाम्पल गिवन टू यू इज, इफ यू आर परचेसिंग गुड्स, हियर टू एलिमेंट्स आर गिवन। अगर आप कुछ गुड्स परचेस करते हो तो आपका गुड्स भी उसमें इन्वॉल्व है और आपका कैश भी उसमें इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली जब आप गुड्स खरीद के आते हो, एक पोर्शन उसका रह गया, एक एलिमेंट उसका आ गया जिसमें गुड्स इन्वॉल्व हो गए एंड द अदर एलिमेंट कैश इज इन्वॉल्व, और मे बी यू हैव टेकन ऑन क्रेडिट, so there will be some person involved. So as per the double entry system, two adjustments will be done in our account. One will be for the goods and another will be for the cash. Surely one will be on the debit side and the other will be on the credit side. क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, that we will learn moving further as per the rules of this accounting. Now what is debit and what is credit? Specifically sticking to डेबिट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है। जब कोई भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, अगर आपने कोई भी प्रोफोमा देखा होगा कभी अकाउंट का, या कोई भी अकाउंट आपने, या आपका कभी बैंक अकाउंट का पासबुक वगैरह देखते हो, उसमें भी डेबिट और क्रेडिट रहता है। नॉर्मली जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड एज द डेबिट साइड। जो अमाउंट रिटर्न होते हैं डेबिट साइड के, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज द डेबिट। जो राइट हैंड साइड होता है अकाउंट का, उसको हम क्रेडिट बुलाते हैं। whatever amounts written on the credit side of a particular account are all the credit. So debit always appears on the left hand side of the account and credit always appears on the right hand side of the account. These are the two opposite sides which you can remember. आप normally in short याद रख सकते हो। If you are not from the commerce background, अगर आपको कभी याद रखने में difficult होता है कि ये side क्या आता है, ये side क्या आता है, you can in short remember if the amounts are appearing on the left hand side will be all the debit amount, and on the credit side will be on your right hand side will be all the credit amount. Now we move on to the classification of accounts. Accounts क्या होता है वो तो आपने सुन लिया और समझ लिया, लेकिन हम लोग अकाउंट्स को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड आई टोल्ड यू कि हम लोग एक बार जब एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमको उसको क्लासिफाई भी करना रहता है इनटू वेरियस सेक्शन। हम लोग उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। So there are three categories of accounts we normally prepare. One is a personal account, one is a real account, and another one is a nominal account. Now let us see what is a personal account. As the name suggests, some person will be involved. Personal, मेरा खुद का, मेरा personal. Now I have given you three categories in the personal account itself. One will be a natural person. Say for example, आलिया भट्ट का account, नरेंद्र मोदी जी का account, निशिका आहूजा का अकाउंट, किसी भी पर्सन का अकाउंट। तो जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हो, यू आर अ नेचुरल पर्सन, यू आर प्रेजेंट, आप अपना अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दैट बिकम्स अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
but there are some artificial personal accounts also. अगर कोई कंपनी अपने नाम का कोई अकाउंट खुलवाती है, कोई इंस्टीट्यूशन अपने नाम का कोई अकाउंट खुलवाती है, तो हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। से फॉर एग्जांपल कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपना अकाउंट खुलवाया, कोई स्कूल में सपोज R.K.Talreja कॉलेज के नाम का एक अकाउंट ओपन हुआ है, तो वो अगर आपका कोई भी फीस आता है, आपका कोई भी ट्रांजेक्शन, अगर कॉलेज वाले कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट से नहीं किए जाते हैं। दैट इज डन फ्रॉम द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट विच इज ऑन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। इंस्टीट्यूशन के नाम से ही हम लोग वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देन वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऑल्सो। अब आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी ग्रुप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ आउटस्टैंडिंग वर्ड कॉमनली जो कॉमर्स के होंगे उनको फिर भी कभी ना कभी उन्हें सुना होगा। आउटस्टैंडिंग वर्ड का इन शॉर्ट मीनिंग होता है पेंडिंग। अगर आपके कोई एक्सपेंसेस पेंडिंग है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। और प्रीपेड, ये हम लोगों ने नॉर्मली सुना है, हम लोग प्रीपेड रिचार्ज किया करते थे पहले, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी भी जो हम रिचार्ज करते हैं कॉल्ड एज अ प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है हमने पहले ही पैसे भर दिए, मतलब मैं 3 मंथ का अगर रिचार्ज करवा रही हूँ, मतलब मैंने पहले ही इसके पैसे भर दिए, तो आई हैव अ प्रीपेड रिचार्ज ऑफ एयरटेल, तो दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो दिस एक्सपेंस बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ अगर मैं आगे जाके पे करने वाली हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सर्विस ले ली है, आप उसका अमाउंट बाद में पे करने वाले हो, तो दैट बिकम्स एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम लोग किसी भी ग्रोसरी स्टोर से कुछ बाय करते जाते हैं, तो जो भी खर्चा मुझे आगे जाके उसको देना पड़ेगा, पूरे मंथ का जो ग्रोसरी बिल हो जाएगा मेरा, या आपको किसी ने कोई सर्विस डिलीवर की है, आप उसको जब मंथ एंड पे पे करते हो, दैट इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये भी पर्सनल कैटेगरी में ही आते हैं, यहाँ पे भी पर्सनल अकाउंट का ही रूल एप्लीकेबल होता है। दे आर टर्म्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाउ कमिंग ऑन टू रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, कि क्या गोल्डन, हम इसको ना गोल्डन रूल्स मानते हैं कि हम जब भी कोई बच्चा 11th स्टैंडर्ड में आता है, तो सबसे पहले हम लोग उनको जब भी बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम फर्स्ट डे पे उनको ये सिखाते हैं कि व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंटेंसी। Because these are the rules, not only a person from commerce background, और हम लोग बोलेंगे कि आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, ये 12th स्टैंडर्ड में याद रखना है, आगे जाके भूल जाओ चलेगा। दिस इज समथिंग विच अपीयर्स डेली इन योर लाइफ। हर रोज आपके दिन में इसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है। जैसे मैंने बताया हर घर में अकाउंट फॉलो होते हैं, तो ये रूल्स भी हमारे साथ डेली बेसिस पे एप्लीकेबल होते रहते हैं। हर रोज हम ये रूल्स फॉलो तो करते हैं, पर हमको पता नहीं होता है कि हम पर्सनल अकाउंट का कुछ रूल फॉलो करते हैं। So let us see what is the rule of the personal account. Personal account says debit the receiver, credit the giver. हमारे बच्चे जब ये पढ़ते हैं तो ऐसे लर्न कर लेते हैं, हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेट अस सी इन डिटेल कि एक्चुअली में जब भी हम लोग डेबिट द रिसीवर बोलते हैं, तो किसको हम लोग मानते हैं कि इसको डेबिट करना है, एंड क्रेडिट द गिवर बोलते हैं, तो व्हाट इज क्रेडिट? एग्जांपल आई हैव रिटन, इफ if you are paying Hrithik Roshan a check of ₹96,000, यहाँ पे दो पार्टीज या दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व है ऋतिक रोशन, और आपने चेक से पेमेंट किया है, तो फाइन। ऋतिक रोशन आपने उसको पे किया, हमने रूल में पढ़ा डेबिट द रिसीवर, तो ये पर्सनल अकाउंट में ऋतिक रोशन बिकम्स द रिसीवर। तो हम अपने ट्रांजेक्शन में डेबिट करेंगे ऋतिक रोशन को, उसको मिला डेबिट द रिसीवर। दिया किसने? बैंक ने दिया। नाउ बैंक इज आल्सो एन इंस्टीट्यूशन, एज वी स्टडी, हमने यहाँ पे पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं। सेकंड कैटेगरी में लिखा हुआ था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्लब हो, कोई भी सोसाइटी हो, तो बैंक इज आल्सो एन इंस्टीट्यूशन। तो हियर विथ आर एग्जांपल, बैंक आल्सो बिकम्स अ पर्सन। बैंक ने दिया, तो बैंक इज द गिवर, दैट विल बी क्रेडिटेड इन आवर ट्रांजेक्शन। एक पार्टी को हमने डेबिट किया, एक पार्टी को हमने क्रेडिट किया। I hope the example is clear for the personal account. Two parties were involved. A person was involved who is receiving the amount,
so we debited him, and our institution was involved, who is a giver, so we credited them. Coming on to our second account, which is the real account. रियल ये वर्ड हम लोग बहुत बार सुनते हैं. रियल नॉर्मली से रियल मतलब समथिंग जेन्युइन जो सच में है, तो उसका मीनिंग भी हमें कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया है. कोई भी फॉर्म के समझे कोई एसेट होते हैं तो आपको टैंजिबल और इंटेंजिबल any assets of the firm तो टैंजिबल है या इंटेंजिबल है, वो इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं रियल अकाउंट के अंदर. टैंजिबल मतलब जो भी आप कोई चीज को अगर टच करके देख रहे हो, फिजिकली फील कर रहे हो, यू आर हैविंग अ विजन ऑफ दैट. हाँ ये विजिबली है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ टैंजिबल रियल अकाउंट. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, मशीन है, लैंड है, कैश है, आपका स्टॉक पड़ा है, आपका मोबाइल फोन पड़ा है, आपकी गाड़ी पड़ी है. समथिंग विच इज क्लियरली विजिबल विद द naked eye to you is a tangible real account. Intangible मतलब आपको पता तो है कि वो है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा. You know कि something is there, which is having an impact on the thing. That becomes an intangible real account. They are related to things, but they cannot be touched or felt physically. Example आपको दिया हुआ है goodwill. Now, though we learn this term or we come across this term in account, but I would say that goodwill is a very common term which we hear in day-to-day life also. Goodwill को आप बोल सकते हो कि किसी भी चीज की रेपुटेशन, किसी पर्सन का रेपुटेशन हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन हो सकता है. Now you all students are part and parcel of our institution R.K.Talreja college because of its goodwill, because somebody would have recommended you. So this is a goodwill of the institution which is intangible. आप देख नहीं सकते, आपको goodwill कहीं दिखाई नहीं देती. Reputation is not something which you have seen personally, but it is there. It has an impact on it. Patent, patent का मतलब होता है आपने अगर अपना कोई न्यू इन्वेंशन किया है, जिसका आपने लाइसेंस लेके रखा है, कोई और पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता. से फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोरोना का वैक्सीन बना है, they have patented their vaccine. Nobody, no other company with the same name can produce the same thing. That means इनके पास इस चीज का पेटेंट है. अगर हमें बनाना है तो we will have to pay them an amount to copy. I'm their sorry to invention. disturb, but voice is little lower now. If you come closer to the mic. Sure, sure. Thank you. Okay, am I audible now clearly? Yeah, it is clear now. Okay, thank you. So goodwill is the reputation of the company. Patent is something you have invented for yourself. आपने कोई invention किया है, आपने उसको trademark किया है, आपने उसका license लेके रखा है, आपका कोई नाम है जिसको आप trademark करवा सकते हो. For example, again अगर आपका कोई खुद का डिजाइन है, आपने खुद का कुछ इन्वेंशन किया, आपने अपने ब्रांड को नाम दे दिया, अपने लोगो को नाम दे दिया, आपने एनी कंपनी से पेप्सी, कोका कोला, वो लोग ने अपने नाम को ट्रेडमार्क करवा के रखा है. सो दैट ब्रांड नेम बिकम्स द intangible real account. These were the classifications of the real account we came across. Now coming on to the rules which apply in the real account. Debit what comes in, credit what goes out. The favorite rule of every commerce student. ये हर एक को याद रहता है, ये रूल वो कभी भूलते नहीं है. अंदर आया डेबिट, बाहर गया क्रेडिट. They think कि every transaction moves around this single rule, but that is the rule which is applicable to real account. जो भी चीजें real category में हमने देखी, which falls under the category of tangible real account or intangible real account. So this rule is applicable to anything, any form of physical assets or intangible assets. Let us consider an example. We have purchased furniture for 10,000 in cash. Here the asset, here the real property is asset. So there are two accounts involved, furniture and cash. So furniture is a real thing which is coming in. So we will debit the furniture. एक asset आपके पास आया है, आपने furniture को purchase किया, it is coming into you. So you will debit this real account. This real account rule will apply to the furniture. The debit will be the effect shown in the transaction for the furniture. Again, the second
proportion of the element is the cash जो आप पे करके आ रहे हो. Cash is also considered as a real thing. Cash आपकी बाहर जा रही है. फर्नीचर अंदर आया तो you will debit it. Cash आपका बाहर गया, it is going out, so you will credit it. This rule is only applicable to real accounts. We sometimes confuse it and mix it with other accounts also. हर एक को हम लोग ये rule apply करने की try करते हैं. But as we will categorize the transaction या फिर हम किसी भी element के बारे में जब हम सोचते हैं, that is why I have given the presentation in such a manner कि हम लोग पहले accounts कौन से involved हो रहे हैं वो देखते हैं कि furniture involved हो रहा है और cash involved हो रहा है. Both the things are a part of the real thing. दोनों ही एक ऐसा हैं, वो एक अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है. So the application will be of the real account. That is why we have debited the furniture and credited the cash. Moving further to our last classification of the account, which is the nominal account. Nominal का मतलब होता है either some expenses you have done or losses you have incurred और income से आपने कुछ कमाई या आपने कहीं से कुछ गेन किया. ऐसे अकाउंट जहाँ से आपका कोई खर्चा हो रहा है, जहाँ से आपका कोई लॉस हो रहा है, आपकी कोई कमाई आ रही है या आपका कोई फायदा हो रहा है. These categories falls under the category of the nominal account. Nominal accounts rarely exist नहीं करते हैं in the physical form. एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि रियल अकाउंट है मतलब फर्नीचर आपको दिखाई दे रहा है कि फर्नीचर है सामने. बट जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, पर हर उस ट्रांजेक्शन के पीछे कुछ ना कुछ मनी इन्वॉल्व रहता है. देयर इज सम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, देयर इज सम मॉनेटरी गेन और लॉस और मे बी सम एक्सपेंस इन्वॉल्व. एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है रेंट का, सैलरी का, कमीशन का. कमीशन पे की है या कमीशन आपने रिसीव की है. तो वन इज एन एग्जांपल ऑफ समथिंग यू हैव पेड. सपोज आपने रेंट पे किया तो वो आपका एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए वो नॉमिनल के अंदर आता है. आपने सैलरी पे किया या रिसीव किया, वो आपका इधर आपका एक्सपेंस या आपकी इनकम में काउंट किया जा सकता है. आपने किसी को कमीशन पे किया, अगेन इज एन एक्सपेंस. आपने किसी से कमीशन रिसीव किया, इज अगेन इनकम. तो ये आपका ऐसा कैटेगरी जो रहता है वो आपका नॉमिनल का पार्ट बन जाता है. द फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट, जब भी आप ये सारे ट्रांजेक्शन जो नॉमिनल के अंदर आते हैं उनको रिकॉर्ड करते हो तो आपको पता चलता है कि इधर आपने प्रॉफिट किया होगा या आपने लॉस किया होगा. द गोल्डन रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड पेमेंट्स. आपने जो भी एक्सपेंसेस अभी तक किए हैं, आपने जो भी लॉसेस इनकर किए हैं, वो सब डेबिट में चले जाते हैं. जो भी फायदा आपका हुआ है, जो भी इनकम्स आपके पास आई है, कोई गेन्स हुए हैं आपके, वो क्रेडिट हो जाता है. लेट अस सी एन एग्जांपल. आपने सैलरी पे किया 20,000 रुपीज इन कैश. So here two proportions are again involved, two elements. एक है सैलरी का पोर्शन, again cash portion is involved. Now the part of salary you are paying is related to nominal. जो सैलरी है नॉमिनल का पार्ट है, बट जो कैश है वो रियल का पार्ट है. हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था. तो नॉमिनल के हिसाब से सैलरी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारा खर्चा है, तो वी विल डेबिट द सैलरी. एंड कैश को रूल अप्लाई करेंगे रियल अकाउंट वाला. कैश हमारा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल अप्लाई होगा यहाँ पे. द एप्लीकेशन ऑफ रियल अकाउंट रूल विल बी हियर ऑन द कैश. So we have debited our salaries and credited our cash. This was the narrow synopsis of all the classifications, personal, real and nominal. Now the process of accounting. हमने पहले देखा था कि हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले कोई ना कोई ट्रांजेक्शन अकर होता है. वी मेक द रिकॉर्डिंग इन द जर्नल एंट्रीज. एक बुक प्रिपेयर करते हैं, वहां पे हम लोग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते जाते हैं. जर्नल एक तरीके का एक रफ पिक्चर होता है जहाँ पे हम सब कुछ लिखते जाते हैं. हर दिन जो भी हुआ, जहाँ से पैसा आया, जहाँ पे पैसा गया, एनी एक्सपेंसेस यू पेड, एनी एसेट यू बॉट, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दिस. एक साथ हम लोग सब कुछ जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. पूरा डब्बा एक साथ भर दिया. अब कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए सेग्रीगेशन करते हैं इनटू अवर लेजर. लेजर इज अ स्पेसिफिक डेट. हर एक चीज का लेजर अलग बनता है. अगर आपने सैलरी पे की है तो देयर विल बी अ सेपरेट अकाउंट फॉर द सैलरी. अगर आपके पास कुछ कैश आया है तो देयर विल बी अ सेपरेट अकाउंट फॉर द कैश. लाइकवाइज आपका हर एक ट्रांजेक्शन का सेग्रीगेशन होता है इन द लेजर.
We prepare the balance of that, हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। हर अकाउंट को क्लोज करके कुछ पैसे जो बच गए या कुछ पैसे जो चले गए उसका हमको बैलेंस नहीं पता चलता है, जो बैलेंसेस हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। फाइनली वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिसमें से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है। कमिंग ऑन टू फर्दर कि फाइनल अकाउंट में जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दिया हुआ है वो एक्चुअली में क्या होता है। दिस इज शॉर्ट समरी ऑफ द अकाउंटिंग। दीज आर द स्टेप्स जिस तरीके से हम एक एंट्री को फाइनल स्टेज तक रिकॉर्ड करते हैं। Coming on to what is a trading account and profit and loss account. See, this is just a short synopsis of these things. ये हम लोग एक्चुअली में बहुत इन डेप्थ सीखते हैं। लाइक अ मैडम सेड टू यू कि हम लोग एक दिन में अकाउंट्स तो नहीं सीख सकेंगे, लेकिन वी कैन कम अक्रॉस डिफरेंट टर्म्स। So just let us see in very brief what is trading account, profit and loss account and the balance sheet. आपका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है उसमें एक समरी रहती है, जो भी खर्चे आपने किए, जो भी इनकम आपके पास आई, जो भी एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आप करते रहते, पूरे साल भर में आपने जो जो किया। तो अभी हम लोग एक कैटेगरी बना रहे हैं। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी भी कंपनी का बनाते हैं या हमारे किसी स्टोर का बनाते हैं, तो ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम आर रिकॉर्डेड इन दीज टू टाइप ऑफ अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. This shows the company's ability कि whether the company is going to generate profit, कि वो लोग अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं और कंपनी आगे जाके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कंपनी ने आज के दिन कितना प्रॉफिट कमाया है और लॉसेज इनकर। It will include all the direct income, indirect income, direct expenses and indirect expenses. जो भी आपका डायरेक्ट खर्चा हुआ है, जो भी आपकी कहीं से इनकम आई है, जो भी आगे आके आपको इन द फ्यूचर फॉर्म में भी आपको एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं और आपके कुछ इनडायरेक्ट इनकम है। दिस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट। देन वी हैव द बैलेंस शीट, जो एक नेक्स्ट स्टेप होता है। दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट विच गिव्स यू अ समरी रिपोर्ट ऑफ कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज हैं, शेयर होल्डर का इक्विटी कितना है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ना शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब कि शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं वो लोग ने इन शॉर्ट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना कमाया। आप नॉर्मल भाषा में अगर समझो कि मैंने अगर अपना बिजनेस शुरू किया है तो एट द एंड मैंने अगर पैसे लगाए तो मेरी खुद की वेल्थ कितनी है, मैंने उसमें से कितना कमाया, व्हाट इज माय रेट ऑफ रिटर्न, कि इतने पैसे लगा के मैंने उसमें से एक्चुअली में कमाया कितना। तो आई कैन इवेल्युएट द टोटल कैपिटल, पूरे कंपनी के कैपिटल को, पूरे कंपनी के बिजनेस के फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द बैलेंस शीट ऑफ दैट कंपनी और ऑफ अ फर्म। सो इट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द कंपनी ओन्स एंड ओज, क्या कंपनी ने कमाया और क्या कंपनी आगे जाके पे करने वाली है, या आगे कंपनी का कुछ पेमेंट जाने वाला है, या फिर कंपनी में कौन से अमाउंट जो है इन्वेस्टर्स ने, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट करके रखे हैं। दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ बैलेंस। It will include all the fixed assets, all the current assets, different type of investments that the company has made, any loans company has taken, any capital which is invested in the business by an individual or by the shareholders contribution. अगर कोई छोटा फर्म रहेगा, अगर कोई छोटी सी कंपनी रहेगी, छोटा सा स्टोर रहेगा, एक पर्सन का क्या कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है, और सिर्फ कंपनी है तो व्हाट शेयर होल्डर्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द कंपनी. This is all the summary, this is all the information which you can get from a company's balance sheet, and you can analyze the financial position of the company by just observing the balance sheet of the company. Now coming on to the part of annual report. हर साल हर कंपनी को अपना एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ता है और इनफैक्ट डिस्क्लोज भी करना पड़ता है टू पब्लिक. आप देखोगे तो आपको ऑनलाइन किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखने मिल जाएगा. You can have the analysis of the balance sheet of any company. अगर आप सपोज किसी भी कंपनी में सोच रहे इन्वेस्ट करने का, या इन जनरल ऑल्सो यू आर हैविंग लाइक क्यूरियोसिटी टू नो कि आपको इस कंपनी का पोजीशन देखना है कि वेदर दिस कंपनी विल बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी इन फ्यूचर और नॉट, या ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, यू कैन ऑब्जर्व बाय द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी. So annual report is a publication that public corporations must provide annually to shareholders specifically to describe their operations and the financial condition. In short,
अगर मैं किसी भी बिजनेस में पैसे लगा रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी मेरा पैसा यूज कहाँ कर रही है, कहाँ पे हमारे पैसे जा रहे हैं, कुछ कमाया या कुछ गवाया, और वेदर इट हैज बीन यूज्ड इन द प्रोडक्टिव मैनर और नॉट। तो ये एक पब्लिकेशन होता है एनुअल रिपोर्ट का, जिसके थ्रू किसी भी शेयर होल्डर को किसी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में मालूम पड़ सकता है कि वेदर द कंपनी हैज डन द ऑपरेशन फीजिबली और नॉट, और उनका फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ स्टैंड कर रहा है, डे टू डे ऑपरेशन कैसे थे, और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट के एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। तो इट इज अ पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी। हम लोगों को हर रोज कंपनी की एक्टिविटीज कैसे गए हैं थ्रू आउट द ईयर वो पता चल सकता है। इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन जस्ट डिस्क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको लगता है कि हमने किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देख लिया, मतलब हमने कंपनी का सिर्फ फाइनेंस पता चला, सिर्फ इतना मालूम पड़ा कि प्रॉफिट में गई कंपनी, के लॉस में गई, या कंपनी को इतना घाटा हुआ, या आगे जाके कंपनी चली गई। बट टू बी ट्रू इट इज वेरी ब्रॉडर इन द कॉन्सेप्ट वाइज। अगर आप देखो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इट इज ऑल्सो शेयरिंग दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और अदर रिपोर्ट्स टू शो द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए और यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन न्यू फ्यूचर, आपको उनके रिपोर्ट देख के पता चल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के स्टेटमेंट देख के पता चलता है कि हमारी कंपनी ने नॉट ओनली प्रॉफिट कमाया है बट इट इज अ गोइंग कंसर्न, कि ये आगे भी चलने वाली है, इस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं, इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इन नियर फ्यूचर वो लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कंपनी विल बी अ गोइंग कंसर्न, उनकी एक्टिविटीज का रेंज कितना है। So by observing the annual report of the company, we can decide the company's position in a different manner. Not only the financial position, but whether the company is also going concern or not. Going concern का मतलब है कि कितने टाइम से वो बिजनेस एक्चुअली में चला भी रही है, कंटिन्यूशन बेसिस पे चल रहा है और आगे भी चल सकता है. We can predict the future of the company by that. Now, I'm just presenting you one of the example of the annual report of a company. I'm just presenting you the contents of the company because अगर आप report देखना चाहोगे तो report is of more than 400 pages. So the recent report which is published, which is of 2020 and 21 is of that company. Just have a look on the report. report के अंदर क्या क्या cover होता है. The font is little smaller. मैंने पूरा index present किया है. ये कंपनी के रिपोर्ट के अंदर कंपनी के मिशन लिखे हुए रहते हैं, कंपनी क्या है, कंपनी आज तक क्या करती है, या ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, कंपनी के 10 ईयर के हाईलाइट किए गए पिछले 10 सालों। एज आई टोल्ड यू कि यू कैन कम टू नो कि कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, तो आपको पता चलता है ये सब डेटा देख के कि ये कंपनी पिछले 10 सालों से क्या करती हुई आई है, विच इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू एनालाइज कि कंपनी आगे भी चलती रहेगी। कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट और अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, कंपनी का ह्यूमन कैपिटल यानी कि एम्प्लॉय, कंपनी का नेचुरल कैपिटल, कंपनी का रिलेशनशिप, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन अंडर अ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, एज वेल एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या क्या किया थ्रू आउट द ईयर, उसका रिपोर्ट, क्या डिस्कशन है, क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लोग मे बी कंसिडर करने वाले, एंड ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो आपने सुना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही प्रेजेंट किए जाते हैं। और जो मीटिंग वो लोग कंडक्ट करने वाले हैं उसका एक नोटिस भी उसमें इंक्लूड किया जाता है कि दे आर गोइंग टू इनवाइट यू फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जो भी शेयर होल्डर्स है उनको एक नोटिस भी दिया जाता है। So this is just a short index of what all a company's report consists of. This is the recent report. If you wish to go and have a glance on the report, you can their website is also mentioned. आप उनका पूरा रिपोर्ट भी देख सकते हो। So annual report is again giving you a lot of information about the company. This is me presenting you the information about the basic terms of accountancy. Thank you so much for this. Thank you, Professor Nishika Ahuja, for making participants familiar with the basics of accounting and financial reporting. I now request Professor Shruti Kumar to ask the queries raised by students in chat box. Now, whatever you have questions, please you write in the chat box because she has explained very nicely each and every word. Debit kya hai, credit kya hai, debtors kya hai, creditors kya hai. But then also whatever you have doubt, please write in chat box. We will give the answers.
ओके, मैम ने लिखा है क्रेडिट मीन्स, सी देयर इज नो वन स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द क्रेडिट। हमने वहाँ पे 3 रूल्स देखे थे, तीनों के हिसाब से क्रेडिट का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलता है। या श्योरली द पीपीटी विल बी सेंड इन द ग्रुप। एंड मूविंग ऑन टू वन थिंग, कि क्रेडिट का जो मीनिंग रहता है वो तीनों रूल्स के हिसाब से डिफरेंट रहता है। अगर आप पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जाओगे तो क्रेडिट का मतलब होता है आपका क्रेडिट द गिवर, जिसने पैसे दिए, या द वन हु इज गिविंग समथिंग। क्रेडिट अगर रियल अकाउंट के हिसाब से जाओगे तो व्हाट इज गोइंग आउट, जो भी चीजें बाहर जा रही है वो हम लोगों का क्रेडिट वर्ड गोज आउट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज खरीदी तो आपका कैश बाहर गया तो वो क्रेडिट होता है। एंड द लास्ट रूल विच स्टेट्स कि क्रेडिट इज द इनकम। तो अगर आपने कोई भी इनकम कमाई है, से फॉर एग्जांपल आपको कहीं से कमीशन मिला, आपको बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला, अगर आप कभी अपना बैंक का पासबुक भी देखोगे ना, आपको कुछ कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, वो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो एनीथिंग विच यू आर रिसीविंग, एनीथिंग विच इज योर इनकम becomes credit. Shall I Real ask the account के queries, ma'am? rules, yeah, sure, Shruti ma'am, please Yes, go ahead. ma'am. Students are asking what is the difference between analysis and interpreting. एनालिसिस का मतलब होता है टू स्टडी द थिंग। कोई भी चीज को जब आप पढ़ते हो, समझते हो, जब आप उसमें से कुछ एनालाइज करते हो, सपोज यू आर टेकिंग अ केस इन योर हैंड, आपको कोई केस स्टडी मिला तो आपने उसको एनालाइज किया। फर्स्ट यू आर डूइंग द रिसर्च, यू आर एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट, मतलब आप उस चीज को समझने की कोशिश करते हो। एंड व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग, मतलब आप उसको एक तरीके से डिकोड कर रहे हो, आप उसका कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे हो, मैं सामने वाले को समझाना चाहता हूँ। तो what will be my interpretation of a particular case can be different from your interpretation. तो एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज को स्टडी करना, एंड इंटरप्रेट का मतलब होता है उसमें से हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग निकलती है, दैट इज व्हाट इंटरप्रिटेशन मीन्स। Yes, ma'am. One more query. What is the difference between trading account, P&L account, and balance sheet? So basically as we guide to very formal standards, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम समझने के लिए ऐसे समझा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिटेल्स विच इज रिलेटेड टू अ फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है जो हम लोगों का, से फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ वर्कर्स को वेजेस पे किए हैं तो वो एक फैक्ट्री का एलिमेंट हो जाता है। अगर आपके गुड्स हैं तो वो फैक्ट्री के एलिमेंट्स हो जाते हैं। Profit and loss account, whereas the broader one, which consists of all other expenses and all other incomes which you are earning, जो भी आपके डिफरेंट बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशन पे खर्चा होता रहता है, विच विल नॉट बी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। वहां पे कोई भी ऐसा खर्चा नहीं होता जिसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कुछ किया है। अदर बिजनेस एक्सपेंसेस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट whereas consists of all the assets and liabilities. Assets and liabilities का terms were already explained in the PPT while doing. So balance sheet comprises of all the assets and liabilities. Ma'am, the PPT was very, very knowledgeable. They are asking you if you can share the same with them. Sure, sure. We'll be sharing the same in all the groups. What is direct and indirect? That is the next query. I mean, Say for example, yes, they might be referring to the expense, right. direct expense. अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंसिडर करके करें, से फॉर एग्जांपल अगर आप चलो मैं घर का एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने घर पे गाजर का हलवा बनाना शुरू किया। तो जो गाजर, जो रॉ मटेरियल हम उसमें यूज कर रहे हैं, तो कैरेट विच वी आर यूजिंग व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग, हम जो सीरा बना रहे हैं, तो वो गाजर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, गोइंग इन द कमोडिटी, इट्स गोइंग इन योर जीरा। और जो आपकी लाइट जल रही है, आजू बाजू के अदर खर्चे हो रहे हैं, मेरे जो एफर्ट्स लग रहे हैं उसके ऊपर, दैट कैन बी एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। दिस इज अ पर्सनल एग्जांपल आई एम गिविंग। whereas अगर आप किसी कंसर्न का भी एग्जांपल लेते हो तो यू कैन मैच इट विद द सेम वन, कि अगर कोई रॉ मटेरियल का खर्चा है दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। whereas अगर आपका फैक्ट्री चल रहा है तो उसके ऊपर जो लाइट आप यूज कर रहे हो, जो पावर आप यूज कर रहे हो, दैट बिकम्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Yes, ma'am. And they are asking also about direct and indirect incomes. Okay, again you can say कि any profit which you are getting from by selling a product is a direct income, वो आपको डायरेक्टली उसमें से आई है, because you have done a transaction, आपने कोई ट्रांजेक्शन अकर किया जिसमें से आपको डायरेक्टली कुछ इनकम मिला।
there can be other indirect income, which any revenues which you are maybe earning because the goodwill of your company, या जो आपको वो business transaction के वजह से नहीं मिल रहा है, any other source of income which you are getting can be an indirect income, जो आपको अपने business के goodwill की वजह से मिलती है या आपके non business transactions की वजह से मिलती है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज नहीं होती हैं, जो डे टू डे बिजनेस का एक्टिविटी की वजह से नहीं, बट आप अदर तरीके से कमाते हो, दैट इज योर इनडायरेक्ट इनकम. Yes, ma'am. And which rule applies to liabilities? Okay, हाँ, this is one of the important point which I would like to also convey कि अगर आप नॉर्मली देखो तो assets और liabilities के लिए भी हम बैलेंसिंग करते हैं. Assets have a debit balance of them, वो लोग डेबिट बैलेंसेस में जाते हैं, और liabilities carry a credit balances for them. Along with the three golden rules, it is also necessary that we all should know that assets carry the debit balances and liabilities do carry a credit balance. One more. What is debit? Again, the same thing. One such query I have already answered. Lastly, I answered along with the, I guess, for the credit. Debit, as per three different rules, have a different state. अगर आप पर्सनल के हिसाब से जाओगे तो डेबिट द रिसीवर हो जाता है, जो रिसीविंग एंड पे होता है, ही इज जस्ट लाइक एनीबॉडी इज रिसीविंग एन अमाउंट विल बी डेबिटेड. अगर आप सेकंड रूल के हिसाब से जाओगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज हमारे पास आ रही है अंदर, दैट विल बी डेबिटेड. और अगर आप नॉमिनल के हिसाब से जाओगे तो डेबिट विल बी कंसिडर्ड एज योर एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. So it has a different criteria as per the different classification of the rule. We cannot stick to one thing that this is debited. Debit has the classification wise, debit differs depending upon the rule to rule. Okay, ma'am. No more queries. Thank you. Thank you so much. Handing over to Sangeeta ma'am. Yes, okay. So all queries answered. So all's well that ends well. Now I call upon Professor Aisha Kanjan to propose the vote of thanks. Good afternoon to all. It gives me an immense pleasure to deliver vote of thanks for such a wonderful session. And I thank everyone who is present, all the dignitaries assembled online for this event. I would give special thanks to our beloved principal ma'am, vice principal ma'am, our technical team, HOD, our staff members, our volunteers, and last but not the least, the people who are presented here, the participants who, because of whom this program is a grand success. I would give special thanks to Nishika ma'am for beautifully presenting the basics of accounts with practical examples, also presenting us the practical example of Dabur Limited, because of which we could actually understand how financial statements are made in a corporate sector. I would request everyone to join the session tomorrow at the same time to understand and to take the benefit of understanding what is tally and how do we create companies and make practical application of accounts with the help of tally. Thank you everyone for joining. Over to you, Sangeeta ma'am. Yes, thank you, ma'am. So Alka ma'am, can we declare the session as closed now? Yeah, when tomorrow, please, all of you try to attend, and tomorrow you'll get more and more knowledge. So shall I wind up? Will you wind The up? feedback link is already shared in the chat box. You can make an announcement that all students who have attended, please fill the feedback form. Have you listened? Sunna aapne? You have to fill the feedback form. I think they will fill. And tomorrow also try to attend 100%. Tomorrow you'll get more and more knowledge regarding tally. Okay, so let me stop the recording. Yeah.